Hello everyone, welcome to my channel or welcome back to my channel. Saying this after a very long period of time, but in my defense, I was not feeling well, but now I am. Let's just get back to the month reading, how this month is gonna unfold. We already have crossed 1 week already, and this is gonna find you when you need it the most. This is again gonna be a timeless reading. I'm quickly gonna check how your particularly day is gonna be, sorry, how your month is gonna be in general. We will check particularly for your love, career, and personal goals, right? Let's check your love life. Okay. लव लाइफ में देखो, एक चीज तो बहुत क्लियर है दैट there will be some grudges that you will be holding against each other, if that is the case, or if that is something that you feel कि is going on. Know this that वो इसलिए हो रहा है because you need to learn this fact, you need to learn this point कि चीज़ों को पकड़ के grudges रख के या फिर just to hold on to something, it's not gonna help you. It's not something which is gonna give you immense pleasure. And removing that grudges part, once you get over with it, you will see how beautiful your relationship is, how blessed your relationship is, and how amazing you can just be with your partner, because this relationship is something जो कि ना बहुत ज़्यादा beautiful, lovely, family type of relationship, family type of energy radiate करता है. Just look at it. I mean, it does show that बहुत ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव होने वाली हैं, बट फॉर दैट यू हैव टू रिलीज वट एवर यू आर होल्डिंग, वट एवर इज देयर, जो कि आप होल्ड करके बैठे हो. You need to let go of it. This month is going to be all about letting go, releasing, and balancing your emotions. See, the more you balance your emotion, the more you sort of just vibe with it, just flow with it. Flow in the sense कि आप उसको बस balance कर लो अपने emotions को. You will see how beautiful your equations just get with your partner, how beautiful and amazing things will get in general with your partner, and you will see how amazing the results are just gonna be. Okay, if there is any blockage that will come into your relationship, any blockage in the month of April will come for the viewers. Okay, I don't know, people who are watching this, देखो अगर तो तुम लोगों में कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिसमें पर्टिकुलरली कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है मेरे रिश्ते में, तो sort of trust your intuition and talk about it. It may not mean that there is already some third person, but definitely किसी ना किसी की, हो सकता है फैमिली मेम्बर हो सकता है कोई क्लोज फ्रेंड हो, बट किसी ना किसी के इंटरफेरेंस से रिश्ता ज़रूर खराब हो रहा है. तो ट्राई एंड टॉक अबाउट दिस. दिस इज अ मेजर ब्लॉकेज दैट इज कमिंग योर वे इन द रिलेशनशिप इन द मंथ ऑफ अप्रैल. एंड ये चीज़ इसी मंथ में सर्फेस लेवल पे आएगी, एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट, बिकॉज द मोर equation, the more difficult people are there in your relationship, the more difficult it will get for you. So it is really important that you just sort of trust your intuition, and if you're feeling something is off, just go and talk about it and have a conversation and get it over with. And now I'm understanding and relating कि वो blockage जो दिख रही है, that you will be holding on to something, वो क्यों आ रही है. बिकॉज तुम होल्ड करके रखोगे कोई थर्ड पार्टी है और कोई थर्ड पर्सन के कारण, एंड वो चीज़ें ऐसी होती है जो आप इजीली नहीं बोल सकते हो. सो यू विल टेक योर टाइम, एंड फेयर इनफ, यू शुड टेक योर टाइम, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू जस्ट टॉक इट आउट. कभी मन में मत रखना, क्योंकि जितना ज़्यादा मन में रखोगे चीज़ें ना, उतनी ज़्यादा आपकी चीज़ें थोड़ी ब्लॉक्ड रहेंगी, ख़राब रहेंगी, एंड यू डेफिनेटली नीड टू वर्क ऑन दैट. एंड इट्स समथिंग, whenever you will work on it, you will see and you will be able to release things much more beautifully, and चीज़ें workout कर जाएंगी. ठीक है, let's see if there's something you need to be cautious about. If in love life, people who are watching this video need to be cautious about.
Okay. I don't know. There is something about third party. There is something very promising and very solid about the third party. क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ पकड़ने वाली बात कि तुम कुछ होल्ड करके रखोगे. There will be some sort of, thing that you will be holding on to. And then there is high priestess, which again shows कि भाई blockage में, which again shows कि definitely कुछ तो ऐसी चीज है जो तुम होल्ड कर रहे हो, तुम छुपा रहे हो, या फिर there is something hidden underneath. Your intuition will guide you. Then there is three of wands, again some third party, क्योंकि वो छुपी हुई के बाद high priestess के बाद third party. Three of wands का आना clearly shows third party. And then you need to be cautious about my clear indication, bro. There is somebody. Talk to your partner, and clearly whosoever is watching this, don't panic, don't just end the things, but make sure that you are taking this up with your partner in a very very gentle and graceful manner. Have a talk and the things will be okay. कई बार आई थिंक आपको ये भी समझना होता है कि कई बार मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एंड उसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण ना काफ़ी चीज़ें आसपास वाले लोग ही आपका रिश्ता ना खराब करने के लिए बैठे होते हैं. सो मेक श्योर दैट यू आर ट्रस्टिंग योर रिलेशनशिप प्रॉपरली एंड नो दैट कि कौन ऐसा इंसान है जो आपका रिश्ता खराब करने को बैठा है. ओके, व्हाट विल बी द आउटकम? व्हाट विल बी द आउटकम? नथिंग टू वरी अबाउट दो. ओके, या जस्टिस विल बी सर्व्ड. जिसने गलत किया होगा उसके साथ गलत होगा, एंड यू विल बी सेव्ड. बट इफ योर पार्टनर इज ट्रू टू यू एंड इफ योर पार्टनर इज 100% राइट विद यू, तो कुछ डरने वाली बात नहीं है. जस्टिस विल बी सर्व्ड, गुड विल हैपन विद यू. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. Get out of your you're not bounded. You're not bounded to answer or say anything to the other person. You're not bounded in anything. Just talk it out. Talk to your partner. जो भी आपके अंदर ऐसे अगर कोई सेल्फ डाउट आ रहा है कि यार मैं ऐसी हूँ तो शायद इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं होता. इट इज़ नॉट यू, इट इज़ द अदर पर्सन इन द रिलेशनशिप, हिम, हर, एनीवन. It is not you, it is the other person. So don't put everything on you. Shine through this, shine through this. Queen of Wands clearly shows कि भाई अपनी power नहीं छोड़नी है. You have to trust yourself, you have to trust your gut feeling, and you have to just understand कि यार सब चीज़ें आप नहीं गलत करते हो. There has to be somebody else, and it should never come onto your insecurities. It should never come onto your feelings, emotions कि मैं ही ऐसा हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होता है. It should never hurt your or sabotage your self worth. You need to work on that, right? That's how you will go by it. And this is for the love reading. We will continue career reading and your other personal goals in the other parts. Thank you so much. Thank you for watching this video. Please share, like, and tell me if you resonate. Thank you.